Uh, meanwhile, other people are still joining. हम लोग एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कौन कौन कहाँ से ज्वाइन किया है. एंड इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा ऑल्सो while giving your interview or while giving your introduction. हेलो. कैन वी स्टार्ट विथ तिलक जी? Well, yeah, sure. हाँ जी. So, yeah, I'm Tilak from Hyderabad, and I'm ओके. hardly having 2 to 3 years of experience in stock market, and I'm an IT employee having more than 20 years of experience. And I chose this stock market as an alternative career path since we are seeing a lot of negativities in IT industry. So why not? ओके. I thought, why can't I choose stock market? So in the last 2 years, I practiced technical analysis. So now currently, from last 2 months, I am doing the fundamental analysis. Okay, okay. So today we will show you something which will take your technical analysis to new heights. Okay, Okay. and the platform we have built. Yep. So Thank you. Mr. Pradeep Kumar, hello. Mr. Pradeep Kumar, are you here? So Mr. Tilak, are you comfortable in Hindi also? Yeah, I'm comfortable. Okay, okay. ये अमित तहिलियानी. Hi, sir, Sridhar here. I'm not Yeah. able to understand Hindi. Can Okay, you? okay. You just need to introduce yourself. Where are you from? I'm Sridhar. I'm basically from Tamil Nadu. Currently, Okay, I'm working in Singapore. Yeah. okay, okay, okay. Thank you, thank you. Mr. Manas Singhal. Hello. It's almost 12:10, so I will start showing you what this Quant-Lab is all about. I will start this presentation now. Let me share my screen. Can you see my screen? Can somebody send me a message? Yeah. Yes, yes. So the idea to develop this screener was that we were facing a lot of problems, chasing some kind of particular, stocks. And those particular criteria was. पीछे से वीडियो ऑन करो तो हो भी जाता है शुरू कर दिया. Hello. Can everybody switch off their mic, please?
Just hold on for a second. सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हमारा क्या आइडिया था कि सबसे ज्यादा पैसा अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये आवाज है ना गूंज रही है, आई थिंक किसी ने दो जगह से ज्वाइन कर रखा है। हेलो। तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या था कि एक स्टॉक है ना, चार स्टेज से निकलता है। स्टेज 1, स्टेज 2, फिर स्टेज 3 ऐसे बनाता है, और फिर स्टेज 4 ऐसे नीचे आ जाता है, फिर से स्टेज 1 में आ जाता है। The voice is echoing. If somebody can check, they have not opened two mics. Amit ji, can you please mute? Hello. Hello. Only Amit ji's mic was on mute. Now I think he muted. Okay. Now it is not echoing. ठीक है, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट। क्या होता है कि जी कोई भी एक स्टॉक है ना, अपने चार स्टेजेस से निकल के जाता है। वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है, और ऐसा आके फिर से फ्लैट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक पिक्चर व्हाट वी लुक फॉर इन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब होता क्या है, ये चार स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेज होता है ये वाला, स्टेज 1, फिर उसके बाद स्टेज 2, फिर उसके बाद स्टेज 3, और फिर उसके बाद होता है स्टेज 4, ठीक है जी। अब अगर आप बुल हैं, आपका क्राइटेरिया बुलिश स्टॉक में जाने के लिए अगर आप शॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे को इस एरिया से मतलब है, सिर्फ इस एरिया से मतलब है, ठीक है। अगर हम इस स्टेज में स्टॉक को पकड़ेंगे तो आप ये लिख भी सकते हैं, तो वी विल लूज टाइम, क्योंकि स्टॉक सिर्फ एक्यूमुलेशन के अंदर है। और स्टेज 1 को एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्यूमुलेशन के अंदर है, और एक्यूमुलेशन के अंदर होने की वजह से वो कितना टाइम लेगा एक्यूमुलेशन के लिए हमें पता नहीं है। तो एज सुन एज वो एक्यूमुलेशन को तोड़ के बाहर निकलता है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक इन दैट स्टेज। और जब तक वो ऊपर जाता है, ठीक है, जब तक वो ऊपर जाता है वी कैन, मतलब मल्टीपल पुलबैक्स लेता है वो, लेकिन हमारे को इसी स्टेज में सबसे ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद है। तो स्टेज 2 में वी आर गेनिंग वैल्यू, तो इसको मार्कअप स्टेज भी बोलते हैं। ये पहले एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्कअप हुआ, और फिर जो बड़ा पैसा है जैसे यहां से एक्यूमुलेट करता है, वो यहीं पे आके ऐसे सेल भी करता है उस स्टॉक को। तो जो ऊपर वाला जो ये जो ड्राइंग है, ये जो ऊपर वाला हमने बनाया है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी, और वो अपना स्टॉक यहाँ पे डंप करेगा। यहाँ पर जनरली उस स्टॉक के बारे में न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है कि उसने कोई टेंडर पास कर लिया, या मतलब सारी बढ़िया न्यूज़ आती है इस फेज में। और यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है, वो अपना जो उसने एक्यूमुलेट कर रखा था नीचे इस लेवल पे, वो अपना सेल करता है। तो दिस सेलिंग कैन गो ऑन फॉर इवन 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऑल्सो, ठीक है। और इट कैन हैपन इन अ डे और टू ऑल्सो। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक है ना 2 ही दिन में नीचे गिर जाता है, क्योंकि पहले से ही वो यहाँ से बेचते हुए आते हैं। और फिर फोर्थ स्टेज आती है, जहां पर यहाँ पर हम वैल्यू भी लूज कर रहे हैं और अपना टाइम भी लूज कर रहे हैं, अगर हम इस स्टेज में स्टॉक को पकड़ते हैं। तो बेसिकली स्टेज 1 में, जो कि हमारी एक्यूमुलेशन स्टेज है, उसमें हम टाइम लूज करते हैं। स्टेज 2 में वी आर ओनली गेनिंग वैल्यू। स्टेज 3 में वी आर लूजिंग टाइम, और स्टेज 4 में वी आर लूजिंग टाइम एंड वैल्यू।
तो जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वो ज्यादातर स्टेज टू में अपना स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं, और स्टेज टू ही वो स्टेज है जहाँ पे आपका मैक्सिमम पैसा बनता है। ठीक है। तो हमने क्वांट लैब जो बनाया था इसी इसी पर्पस के लिए बनाया था। ठीक है जी। तो आई नीड अ वॉलंटियर हु कैन जस्ट टेल मी, और कोई भी वॉलंटियर आ सकते हैं स्क्रीन पे, जो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, ठीक है, हमने इसको वीकली कर दिया। हमने सारे इंडिकेटर बंद कर दिए, और अब आप मेरे को बताइए कि ये कौन से स्टेज में है। आप मैसेज भी डाल सकते हैं। सर ये बाहर निकलना कौन सा, ये वाला चार्ट डॉक्टर? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब ये मैंने ना असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब देखिए ये कौन से स्टेज में है। अब देखिए। सर ये थर्ड स्टेज में होना चाहिए, नीचे आ रहा है ऊपर, ऊपर का जो रेजिस्टेंस टच करके नीचे आ रहा है। सर ये अभी भी स्टेज टू में ही है। स्टेज टू में भी वो वॉलेटिलिटी तो कुछ करेगा ना, कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। जी सर। जब ये इस ओके। नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जाएगा तब स्टेज थ्री स्टार्ट होगी। ओके सर। ओके। भारतीय एयरटेल। सर ये भी ब्रेकआउट कर सकता है, ऊपर वाली लाइन अभी जो है। यस, 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 यस। तो वी कैन स्टे दैट के स्टेज टू में कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट कर सकता है। अडानी पोर्ट। सही है सर। सर ये भी सर वही आप जैसे सेकंड स्टेज में बोल रहे हैं तो। हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए कितना आसान हो गया ना हमारे को सेकंड स्टेज का। अब जैसे ये हम स्टेज थ्री भी बोल सकते हैं, और गोइंग इनटू स्टेज फोर भी बोल सकते हैं अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो जी। आपको एक आइडिया लग गया। हम्म। बेसिकली देखने का एक आइडिया लग गया। ठीक है। अब ये स्टेज टू में ही है ये भी स्टॉक। हेलो। सर। स्टेज टू में है ना शुरू से ही। जी जी सर। ठीक है। तो इस स्टॉक में पैसा बनाने की हमारी जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। हम्म। जी सर। चल चलिए मैं और इसको और दिखाता हूँ, इसको मंथली चार्ट में दिखाता हूँ। अब इस स्टॉक में तो हमारी पैसा बनाने की तेजी तेजी नहीं रहेगी ना। नहीं सर, नीचे आ गया, ऊपर एकदम टच करके फिर नीचे हाँ, आ गया। बजाज ऑटो देखिए। ये तो अभी चालू हुआ लग रहा है सर, यहाँ से ब्रेकआउट। HDFC बैंक। ये नीचे है। एटर्नल। एटर्नल भी सर अभी एक दो दिन पहले ही, यानी उसने ये ऊपर। मंथली है जी, मंथली है। जी। हाँ पर सर वो ऑलमोस्ट हाई, ऑल टाइम हाई के आजू बाजू। हम्म, 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 तो अब आप देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ हमने एक आपको वीडियो दिखाई, एक फोटो दिखाई। उस फोटो से आपको ये समझ में आ गया कि कौन से स्टॉक्स में हमारे को काम करना है। ये बात समझ में आ रही है सर आपको। जी सर। ठीक है। अब देखिए टाइटन कहाँ जा रहा है। ग्रासिम। तो इस तरीके से हम लोग जो स्टॉक्स हमारे को मतलब आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है जी ये। इसमें से आप अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, और करने के बाद उसमें से कौन से आपको बेस्ट सेटअप्स लग रहे हैं ऑन डेली, वीकली, या जो भी आप टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आप जोन सा भी आप टाइम फ्रेम करना चाहते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अपना एंट्री, प्रिसाइज एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे JSW स्टील है, देखिए कंटिन्यूस अप स्टेज में है, अप ट्रेंड में है। देखिए आइशर मोटर कहाँ जा रहा है।
तो ये बेसिक आइडिया था, ठीक है जी। इसको हमने लेके हमने हमारे को ना बहुत दिक्कत होती थी कि देर आर अबाउट, आप समझिए कितने स्टॉक्स हैं, कोई कोई बता सकता है मेरे को, हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर इन निफ्टी? एनी गेसेस? सर कोई निफ्टी गेस? निफ्टी 50 बोल रहे हैं सर, तो नहीं, उसमें निफ्टी में एनएससी पे कितने स्टॉक लिस्टेड है? सर एनएससी पे तो होंगे 2000 के ऊपर ही होंगे सर। ठीक है, तो ये हमने गूगल करा, क्या लगा, क्या निकला, कोई नंबर आया? मोटा मोटी ये दिखा रहा है, निफ्टी हैज 2671 कंपनीज लिस्टेड एज ऑन December 24। जी और अभी सर। देखते हैं, ओवर 2700। ठीक है, तो मोटा मोटी 2700 कंपनीज में अगर हमारे को ढूंढना है, तो हमारा जो ये स्टॉक स्क्रीनर है क्वांट लैब, ये तकरीबन 26 से 34 स्टॉक एनालाइज कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर इनमें से आपको ये पता चल जाए कि कौन से स्टेज 2 में है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा सर। तो ये हमने उसका क्राइटेरिया बनाया, और क्राइटेरिया बना के हमने यहाँ पर इसको लिस्ट कर दिया। तो स्टेज 2 स्टॉक जितने भी, मान लीजिए 26 से 34 स्टॉक्स हैं, तो दिस बिकम्स आवर यूनिवर्स टू ट्रेड। तो 758 स्टॉक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेज 4 में वो ऊपर नहीं जाएगा या कैसे जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके थ्रू कि इस स्टेज में पैसा बनाने की जो स्पीड है और जो प्रोबेबिलिटीज है वो थोड़ी सी फास्ट रहती है। ठीक है सर। तो अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कौन से स्टॉक दिखा रहा है। तो अब दिखा रहा है बाइक, वो दिखा रहा है क्यूपिड दिखा रहा है। इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, है सर स्टेज 2 में। क्यूपिड देखते हैं, देखिए। So we need to check every day on the site, or how we know it's generated the call first day. ओके ओके ओके, सर आप क्या कर सकते हैं? आर यू कंफर्टेबल इफ आई स्पीक इन हिंदी? No, I'm not able to understand Hindi. Hindi, okay. What you can do is that you can come to this dashboard. You can come to this stage 2 stocks, okay, and there is a export CSV, this option. Okay, You can download this list also, okay. and you know how to convert this into a watch list in TradingView. From this Excel to no, Yes, CSV to TradingView. no. Okay, I will upload a separate video for the same, Mm-hmm. how to convert it into a watch list. Okay, Okay, so if you will see, I'll show you. So I've already made this list. So you can bring this into your watch list. okay. Okay. And once you bring this into your watch list, you can just browse through the stocks easily. Mm-hmm. Okay. Okay, So this way you can use this what do you call, platform in a better way. Okay. Hello. okay. So you can download the CSV, you can make the watch list, and then from the watch list, whichever stock is giving you a better what do you call, area to invest, so you can put your money there. So basically what we have done is, first step, that we have reduced the number of stocks from 2634 to 758, Mm-hmm. which has the highest probability to make money easily and fast. Okay, Okay. Then there are readers. Then this is the breadth of the market. So what does it say?
that advance decline ratio is only 0.71. So 1028 stocks on Friday, they made an advance, and 1446 stocks, they made a decline. Okay. And overall, if you see the market breadth, it is about 45%. So 45, more than 55% stocks are below 200 DMA at the current stage. So it is showing a bearish regime, a slightly bearish regime. If This file, uh, Hmm. uh, how frequently it's updating the Sir, live every market? day, every day. Okay. Okay. So currently there are about 55%. So breadth is only 45%. So 45% of the stocks are above 200 DMA. So what we understand by this is that the broader market is not into a bullish regime. If the bullish regime is there, so most of the stocks would have been trading above the 200 DMA. You understand this? Yes. Okay. So this is the average percentage across above 50, 100 and 200 EMA. The health is neutral. So around 45, 40 to 60%, we can say that the health is neutral. Above 60%, we can say the health is very good. Below 40%, we can say the health is very bad. So now you can see about 200, about 20 DMA, how many stocks are there? 44.3%. Above EMA 50 are there, 48.5%. Above 100 DMA, this. And above 200 DMA is only this. Okay. And this is the graphical representation. So this is the second. Now we have this sector rotation graphs also, if you understand that which this is the leading quadrant, this is the declining quadrant, and hence the improving and weakening and lagging and improving. So a stock which goes through cycles, so they will be either in four categories: leading, improving, lagging, and weakening. So whichever stocks are there in, or whichever what do you call, sectors are there in leading, they will be showing a very good price action. For example, we click on this fast moving consumer goods. Wait. Now here you see fast moving consumer goods. So this is leading. Now what we go is we will go into sector rotation and we will see where is the fast moving consumer goods. This is the fast moving consumer goods. So it says leading. So we will go into the stocks and we will open the stocks. Cupid I have just shown. I will show you Honasa. Let's see. So Mr. Sridhar, can you see the stock? What is going? Hello. सर ये डेली में भी ब्रेकआउट दिया है, इसमें वीकली मंथली पे भी देखिएगा तो देखिए जिस वीकली पे भी दे दिया इसने, हम्म, मंथली पे भी दे दिया है सर, ये तो लेना ही चाहिए यानी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका जो रिसर्च है वो हमने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है। जी सर। आपको बहुत सारे स्क्रीनर, बहुत सारे हम लोग ये बनाते हैं ना, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर्स के थ्रू बनाते हैं, अपने स्क्रीनर बनाते हैं, प्राइस एक्शन के थ्रू बनाते हैं, हमने बहुत सिंपल कर दिया उसको। और यहाँ पर सारा आपको फंडामेंटल उसके रिगार्डिंग भी सब कुछ मिल जाएगा, या जो भी है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, ठीक है, वर्सेस निफ्टी 500। ठीक है। जी मैक्स सर। ट्रेंड आरएस क्या आ रहा है, आरएस ट्रेंड क्या कह रहा है, एक्शन क्या कह रहा है, राइट ट्रेंड बोल रहा है। ठीक है। स्टेज टू एडवांसिंग, तो ये हमने रेटिंग भी कर दी स्टॉक की कि आपको कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है जी। तो ऐसे ही सेक्टर रोटेशन में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि लीडिंग सेक्टर का लीडिंग स्टॉक, तो हम देखेंगे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो जी एथर सर। एनर्जी खोल के देखते हैं क्या कर रहा है।
ये देखिए, तो यहीं पे आपको चार्टिंग टूल भी मिल जाता है ये अभी क्या कर रहा है। तो अगर आपको डेली देखना है डेली देखिए, अगर आपको वीकली में देखना है वीकली देख सकते हैं, ठीक है। और मंथली देखना है तो आप मंथली भी देख सकते हो। तो आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया यहाँ पर दिख जाएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो ईटीएफ्स हैं, कई लोग अगर स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो जो ईटीएफ्स है ईटीएफ्स का भी हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर आप पहला टैब देखेंगे ऑल डोमेस्टिक, इसको हम नीचे करेंगे तो ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो अगर हम इसको करते हैं, इसको रन करते हैं, तो देखिए मॉन Q50, मॉन 100, मफांग, फार्मा 20, ये टॉप है। और इनकी आप परसेंट, इसका आप रिटर्न देख लीजिए क्या आ रहा है। बताइए क्या सवाल रहेगा। ये किसी का आवाज आ रहा है, माइक क्लोज कर देंगे तो, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी जो ईटीएफ है जो बढ़िया कर रहे हैं, तो हम एक बार सिर्फ मॉन 100 का चार्ट खोल के देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमारे को सिर्फ क्या करना है, फार्मा 20, तो स्टेज यहाँ से बड़े आराम से कैटेगराइजेशन हो जाएगी कि कौन से स्टेज में है और पैसा बनाना आसान है कि नहीं है, ठीक है जी। जी सर। हाँ, तो आपको ये यहाँ से अगर आपको ईटीएफ में करना चाहता है तो ईटीएफ का भी सेक्शन है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, टेक्नो फंडा रडार कोई करना चाहता है, तो ये जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं तो इनके आप फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और प्राइस एक्शन भी चेक करेंगे। तो आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन से स्टेज में है और क्या कर रहा है। तो भारत भारत सीट्स देखते हैं, चलिए। देखिए क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ना जी। जी सर। वीकली पे तो, मंथली पे जी सर। मंथली, वीकली हाँ। हम्म। और डेली, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली ये सारा आइडिया है इसका। संदूमा देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं संदूमा। ये थोड़ा सा लैगिंग है अभी। सर इसमें हाँ जी। जैसे मैंने देखा था प्लेटफॉर्म, तो A B C कैटेगरी भी दिया हुआ है, तो सर उसमें कुछ अपन यानी सी कैटेगरी का थोड़ा कम देखें प्रेफरेंस में, या A B C ऐसे, तो उसका उसको यानी उससे फर्क पड़ता है कि सर स्टॉक सिलेक्शन में अपने को जैसे। हाँ, वो उससे फर्क पड़ता है, अभी हम उस वाले पॉइंट पे भी आते हैं, ठीक है। जी। जी सर। जी सर। तो अभी कोई अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि हमारे को तो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स ही चाहिए। तो देखिए ये कितना रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो हम ये क्वालिटी फार्मास्यूटिकल खोल के देखते हैं। ये भी, तो आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी वैसे बेसिकली यहीं पे मिल जाएगा। और सारा आपको जितना भी, जैसे अभी डे में देखते हैं इसको क्या कर रहा है। ये देखिए, तो फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वीक में देखते हैं। S2 सर इधर दिखा रहा है उसमें चार्टिंग में हाँ जी, हाँ S2। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपका जो बेसिकली जो टाइम है, ये टाइम पूरा बचा देगा। आपको कोई और जगह पे देखना ही नहीं है ना फिर। इसमें से आपको बेस्ट स्टॉक निकालना है, जो भी आपको लगता है कि
जैसे बोलते हैं ना हम लोग बाय ऑन डिक्लाइंस, जब स्टॉक अपने राइजिंग में है तो बाय ऑन डिक्लाइन पे जो भी अपने की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ रहा है उसको आपको बाय करना है। ठीक है ना जी। जी सर। तो ऐसे ही हमने सेक्टर रोटेशन का भी वो बना दिया। आप कौन से सेक्टर में कौन सा लीडिंग है आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी हमने देखा, तो रेट गेन क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर से राइजिंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फिर जस्ट एंट्री खोजना रह जाएगा। क्यों जी। फिर इसके बाद हमारा एक ये आता है टेक्नो फंडा रडार, मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। जो टेक्निकली जो फंडामेंटली भी गुड स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये कि हमने बनाया एजेंट्स। अब जैसे जी कई लोग कहते हैं कि जी हमारे को वॉरेन बफेट के स्टाइल में इन्वेस्टिंग करनी है, तो हमने उसका भी यहाँ पर सेक्शन बना दिया। तो अब हमने इसमें क्या करा कि जो अलग अलग जो मार्केटिंग जो स्टॉक मार्केट गुरुज हैं, जैसे वॉरेन बफे हो गया, बेंजामिन ग्राहम हो गया, चार्ली मुंगर हो गया, पीटर लिंच हो गया, स्टैनली डंकन मिलर हो गया, माइकल बरी हो गया, तो ये इन्वेस्टर है। पहले तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, विलियम ओनील इन्वेस्टर, बिल एकमैन इन्वेस्टर। और फिर हमने उनके स्क्रीनर जो वो फंडामेंट जो वो जिस तरीके से वो स्क्रीन करते थे उसका हमने इसमें स्कैनर डाल के, और उसको उसी जिसको भी आप ऊपर क्लिक करेंगे नीचे उसकी स्कैन उसके स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये नीचे आ गई। तो अब कोई कहता है कि जी हमारे को मार्क मिलर बुकिंग चाहिए या मोमेंटम ट्रेडिंग चाहिए, तो वो RS मोमेंटम से हमने उसको फिल्टर कर दिया। तो देखिए अब ये जो भी स्टॉक्स आएंगे, जैसे वेल कॉर्प पे खोल के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है अभी, आउट परफॉर्म कर रहा है ना मार्केट को। ठीक है। जी सर। फिर ये ब्रेकआउट ट्रेडर ओलिवर कैल क्या कर रहा है जी, ये देख लेते हैं। इसके स्टॉक सारे नीचे आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, इसमें ज्यादा स्टॉक The होंगे। stocks, okay, I just one question. When the या stocks coming in the momentum, when is the peak start, it will come into the list or it's in the off way or how we are adding in the list. हाँ सर, फॉर दिस यू हैव टू डू अ लिटिल होमवर्क because a lot of people ask the same question to us. So what we tell them that stocks goes on for a small correction and then advancing phase. Okay, in stage 2 also. So what you can do is you can make your own list and list of probables. Okay, and from that list of probables you can sort the list that okay, I will buy this list or I will buy this stock when it shows this kind of price action. So for example, suppose I go to this Mark Minervini stage 2. Okay, I get this stock called Craftsman. Okay, so what I can do is I can either, because it is already in stage 2, so what I can do is I can put an alarm that whenever it reaches back to this moving average, the fastest moving average, so I will buy around this price. Okay, so you might be able to see that it is making an advance, then it is coming back to the EMA, and then it is advancing, then it is again coming back, taking a support, and then it is moving forward. So what you can do is you can sort this list as per your criteria. Suppose you buy on breakouts. So if I show you, it is making in this range, it has just broken out from this range. Okay, of this range of Is it around. possible? Okay, I just my suggestion. Your website, is it possible when is the stage 2 activated? You can able to mark the date and then the price can able to put inside. At least easily we can able to identify that we can use, or Sir, is it it not? is not. It is not possible because you cannot. What do you call? There might be certain price movements which you cannot track. Okay, and when these certain price movements which you are not able to track, or there is sudden price incoming to the stock or to the sector. Okay, so what all EMAs or the indicators would have been doing there, you cannot gauge them. Okay, and you cannot make
a specific criteria according to those stage 2. So the basic criteria of the stage 2 is that all the moving averages are in alignment. That 100 DMA is about 200 DMA, 50 DMA is about 100 DMA, 20 DMA is about 8 or 10 DMA. So this is the basic criteria for the stages to be identified. But when the stock will come, and suppose in this area, okay, in this area, the prices or the moving averages are not sorted out. But in this area, the moving averages are sorted out. Okay. So we can provide you a broader list. From that list, all you need to do is you need to be patient and see which stocks are coming as per your criteria. For example, that there were about how many stocks on the NSE which I showed you. Hello. Yeah, I can hear you. We have Yes. analyzed about 2,600 stocks, no? Mhm. And out of those, only 758 are in stage 2. Mhm. So in this 758, you have to choose. And out of those also, what you can do is you can just open this list and you can choose from top 100 of this list only. Okay. So particularly, see, we are not catering to very few people. We are catering to masses, sir. So everybody has their own understanding of the market. Okay. So we cannot, customize everything to the last person. What we have to do is we have to make a broader, picture, and then we have to present it to people. And people will, according to their understanding of the system or the price action, they can choose the best stocks which are available in the market at that particular time. You got my point, sir? Yeah, it's almost like a two manual work, all lot of things. I understand. Yeah. Okay. Sir, it is manual, but earlier, how you were doing, sir? No. Some I filter, some alco I created. It will pop up me the things what are very short few stocks. Yeah. Yeah. So that there also you are doing manual work only, no? It will filter for me. It's a top 10. Yeah, something like that. Okay. So we are also filtering you top, say 750. Okay. And out of those 750, you can just choose the top 10 or top 20 also. But we have given you a very specific list. Okay. You understand this? Otherwise, what you can do is you can go to this agent section. You can choose whatever, what do you call, mentality or the, momentum or investing or value investing, whatever is your criteria, you can choose that kind of investor. Go to go to their list and select the stock from there also. So, what happens is, sir, whenever you see a new platform, you will at least take 2-3 days to get accustomed to it. We have also done the same thing with the other products available in the market, and it will take some time. And once you are accustomed with it, you will just take 10 minutes to choose the stock, close the platform, and invest the money there and then on Monday or Tuesday or whatever day you want to do it. There is an option. There is an option here in the momentum investing option. Mhm. Here is a alpha momentum criteria. So this select Yes. the stock select the stock by momentum, and it show what filter the stocks by UPI index. So if UPI index is Ulcer Performance Index, it is used to categorize the low volatile stock and give you the best stock out of 500 stock. If you're using Nifty 500, or if you're using any other index, where you want to invest, suppose Nifty 50, mid cap 50, anywhere where you want to invest, just filter using UPI, and you will get the top 20, 30, 40 stock where you want to invest, and just invest in top 20 and keep the ranking criteria 1 to 20 for investing and for 40 to 50 for exit. Once your stocks
go out of 40, exit that particular stock and invest in that stock which is under 1 to 20 rank. So this is called momentum investing, and rebalance your portfolio as per your requirement. Suppose we do rebalancing every month on any particular date, fifth of every month or first of every month, what you want to select, or you can create bi-weekly investing or fortnightly or tri-weekly, whenever you want to adjust your portfolio. So this has generated a 38% CAGR since January 2026. We have started investing on this particular criteria, but we have backtested this using data. This has generated for 38 to 70% CAGR since 2020. 20 lakh invested converted to 7 CR in 6 years. Okay. Okay. So does this answer your question, sir? No, yeah, I want to use some platform. It want to make me very useful and it's simplify. If you're saying 750 stocks, I need to go and monitor, and at least this alpha No, momentum is you benefit don't for need my. to make the 1250 stock. You just want to observe where you want to invest. Suppose you want to invest in Nifty 400. Nifty 400 is equal to Nifty mid cap 150 plus Nifty small cap 250. Is together make a Nifty 400. So suppose you want to invest in Nifty 400, then select a universe of Nifty 400 to the left and benchmarking keep Nifty 500 and select the period for 1 year. Select the period for 1 year, Nifty for 1 year, and top. If you want to invest in 20 stock, then 20, and otherwise if you want to increase your stock portfolio, then 25, 30, whatever you want to, and filter out those stock by also performance in the UPI, and invest in the top 20 stock and rebalance your portfolio as per your requirement. Suppose you want to rebalance it every quarter, you can do that. You want to rebalance only monthly, you can do that. So we have backtested this for monthly reinvesting is the best criteria, and that has generated fantabulous returns. And this is awesome. This is at least benefit for them. Yeah, feels good. Daily benefit. Yeah. And there is a super trend grid. Why we have filtered the super trend grid? Suppose if your market is falling, okay, and Nifty weekly Nifty 500, that is the major index, is below the super trend filter, then there will be no stock in the filter. So you don't want to invest in the bear market when the market is falling and your stocks also keep falling. Mm-hmm, mm-hmm. And suppose the Nifty 500 again close above the super trend, then stock will automatically come in the filter. So there won't be any major setback in in your portfolio. Support to you may miss 2 to 3%, 4 to 5% return initially, but you will not miss the major trend. Okay. Got it. Yes. So if I want to invest from Monday, I can take top 10 stock to invest from here. I am right to Yeah. say that. Yeah. If you're creating a 10 stock portfolio, then keep an exit rank of 25. Once your bought stock goes out of 25 the rank, exit that particular stock. Invest the same money in the top 10 stock if a new stock arrived in the top 10. Okay. The And next month, there is an option of position sizing, that is inverse volatility and low equal portfolio, equal weight. Equal weight is, suppose you want to invest 20 lakhs in 10 stocks, so 2 lakh allocation to each. Inverse portfolio show that if you want to invest in high in the low volatile stack, then you can select the inverse volatility option. Okay. Got it. Yeah. Yeah. At least this one is benefit. Yeah. Please make it simple. Okay. Similarly, for ETF also, if someone want to invest in ETF and don't want to look at the market, best ETF investing is weekly rebalancing. Select the top 3 ETF, whether you want to buy domestic, international, or only international or domestic plus international. Select the top 3, and
once exit rank is 6, you exit that particular ETF and reinvest in those amount in top 3 in ETF. And this you do every weekly on Friday. It had generated this 400% return with effect from 2022, and the CAGR was 30% in ETF. So you will beat any mutual fund. Yeah. So, sir, you can also, track the foreign portfolio investor, incoming funds, in which sector it is coming in. Uh-huh. This way. So since it is updated every 15 days, so our platform also shows the, foreign institutional investor incoming. Uh, Okay. okay. So this is the daily turnover of what they have done. And we have our Telegram channel also link here. So if you want to join the Telegram channel, so we keep on updating some news, some question and some answers, whatever queries you have. So you can ask them in the channel also by joining the channel. And there is this academy also. So we have given the lessons also how to, what do you want to see in the stage 2, beginner, intermediate, advanced, what does it mean? So we have given the short lectures also here. Okay. So you can read about them also. So this is the section of fresh signals. What you were asking, sir? Mr. Sridhar, you were asking about the alert signal. There is an alert section which filter out the stock which day it entered in the stock in the stage 2, a date Yeah, wise. You yeah, can yeah. go to calendar. It will filter those stock which initially come to stage 2. At the right corner of the session, there is a filter, and you'll get the high, low, and 52-week high, 50-week low, and then there is a stage 4 criteria also. Some stock came into stage 4. Then this will also alert section will alert you that this particular stock has come into stage 4. At the Sorry. bottom of How to use this? I need to go to. Wait. You need to come to this alert section. Okay. So it will open this kind of a, list. Okay. So new all-time high. Mm-hmm. It is showing entered stage 2. Okay. Enter stage 2. Yeah. Something like this. Yeah. Yes. And Okay. this is showing all-time high. This is new 52-week high. Mm-hmm. Okay. And this is RS turned positive. So we will see what Moti Sons is doing, for example. So it has just broken out of a consolidation. Okay. Something like that. Yeah. Okay. So now easy to I can decide enter or don't enter. Yeah. Okay. Yeah. So this is how you can do it. So RS turned positive, and then we have entered stage 4. So we will see this. We can avoid this kind of stocks. Yeah. So if you want to do some shorting, if the stock is available in stage 4 and it is available in FNO, so you can do that also. Okay. Okay. So how frequent this filter will be updated? End of the day or every day morning or End of the day. Sir, only okay. after, each candle closes, no? Mm-hmm.
Because if you select intraday, what happens? Sometimes candle close below the certain moving average, or sometimes it touch the moving average and reverse back. So that filter will not work intraday. Absolutely. Yeah. So we need a closing Yeah. for understanding that particular stock has really broken out down or broken Or out above. breakdown. Yeah. Understands. So anybody has any more questions? अभी जो अलर्ट में दिखाया एंटर स्टेज 2 हम्म, वो जस्ट अभी एंटर ही किए हैं, वो लिस्ट है ये? हाँ जी। बस यही चाहिए था, क्योंकि जो ऊपर लिस्ट आती है ना उसमें तो काफी स्टॉक बहुत चल चुके होते हैं। ये फिल्टर्ड मिल गए जो जस्ट अभी एंटर ही किया है। जो कि स्टॉक चल चुके हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्यूपिड पिछले 3 साल से भाग रहा है और हमने क्यूपिड में 200 रुपए पे एंट्री मारी, अभी भी वो 93 रुपीज ऊपर है विद इन एक मंथ में। तो आप टॉप 20 परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ले रहे हो और उसके बाद आप रिबैलेंसिंग कर रहे हो, तो आपके पोर्टफोलियो से कचरा वैसे भी बाहर हो रहा है। यू आर नॉट होल्डिंग द कचरा स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो वंस यू आर रीबैलेंसिंग एवरी मंथ। देखिए ये कौन सा डेटा है, यहाँ से दिखेंगे ना अगर आप। Stock has not limited 52 week high. Once it's broken above 52 week high, it is not limited that it is the last 52 week high. That's why it is the equal weighted portfolio, and we are investing equal amount of money in each of the stocks, so that if one goes down to 30% also, a 20 lakh portfolio will have a drawdown of only 1.5%. सर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया सर प्रदीप जी? हाँ जी ओके गुड। हाँ जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? बता देता हूं कि आपको जो स्टेज 2 के स्टॉक देखते हैं, आप कभी जाके स्कीनर सेक्शन में देखिएगा। जो स्टेज 2 के भागते हुए स्टॉक होंगे ना, जो जिसकी वैल्यू होगी 4000 5000 रुपीज, उसमें कोई रिटेलर्स नहीं होता है। उसमें आपको ज्यादातर मिलेंगे प्रमोटर, एफआई, डीआई। ठीक है। और क्योंकि उसमें रिटेलर्स कम होता है, वो स्टॉक इतनी तेज भागते हैं कि रिटेलर्स को लगता है अब तो इसका पीक बन गया, हाई बन गया, अब उसके ऊपर जाएगा नहीं। और दे कीप आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर। So you have to, if you want to invest and earn good money, then you have to keep aside your criteria and keep aside your thought that stock has gone so up, so we don't want to invest at particular level. Sir, the stock which is making new Okay. highs, it might make new highs also, no? Because there is no previous resistance and everybody is in profit. Nobody wants to sell. So a smaller amount of demand in the stock will, push the price to a very high price. ठीक है What about ठीक है। grade C, what it is mentioning? Huh? Grade C, grade D, yeah, that one. एक बार अंकित भैया आप बताइए, क्या बताना है? ये जो C, D, A ये जो आता है ना, स्टेज 2 के भी ना बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ए बी सी, मतलब ए मतलब और सभी आरे फिल्टर पास है और इट इज इन स्टेज 2 ऑफ ए लेवल का स्टॉक है। सिमिलरली सम फिल्टर डू नॉट पास, तो दैट कम्स इनटू बी क्राइटेरिया। Similarly, if there is a C grade C stock, that means some of the filters did not pass B, that's why came into C. Then ऊपर आपको प्राइस एंड फंडामेंटल, ऊपर प्राइस में आपको 52 वीक रेंज, हाई लो। एडीआर मतलब होता है एवरेज डेली रेंज पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी है। एटीआर मतलब एक दिन का एटीआर कितना, मतलब कितना स्टॉक एक दिन में मूव करता है अप्रोक्सीमेटली। तो 33 रुपीज के आसपास टेक्नोलॉजी का मूव करता है। उसके बाद इसमें वीकली वीवैप, मंथली वीवैप, इसको ये सपोर्ट का काम करते हैं। तो मैंने इसको आपको चार्ट में ना देके डायरेक्ट ऊपर दे दिया कि आप कंटिन्यूसली डायरेक्ट रीड कर सकते हैं कि क्वार्टरली वीवैप के ऊपर है कि नहीं है, मंथली वीवैप के ऊपर है कि नहीं, वीकली के ऊपर है कि नहीं है। सिमिलरली
उसमें 50 एवरेज भी दिया है, 30 डे, 50 डे, 150 डे, 200 डे का. देन देयर इज अ फंडामेंटल सेक्शन बिलो दैट पर्टिकुलर प्राइस सेक्शन की मोमेंटम में क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ग्रोथ एंड रिटर्न्स क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक. देयर चार्टिंग section below that you can visually see the stock. Below that there is an RS Mansfield RS. If you search about Mansfield RS, it is showing the outperformance of the stock versus the benchmark. तो एक बार भैया सागर भैया स्क्रॉल करना नीचे तक थोड़ा. So that particular relative strength, there are three methods of relative strength. Then it is there's written clearly strongly outperforming the benchmark. The stock return is this, benchmark return is this. Then there is the ratio difference between this. Then the relative return is this. And so once there is a chart below RS chart, the once it comes to green zone, that stock start outperforming the index. This. Then there is a green dot. Once green dot appears, but means stock is started outperforming the index. You can invest on green dot and exit on red dot. Then EPS revenue quarterly, monthly, then multi-agent verdict. We have created agent beside the stock that will give the verdict of fundamental analyst, technical analyst, flow sentimental analyst, delivery percent kya hai, bear bull researcher. Everything is at one place. आपका क्वेश्चन आंसर हो गया सर? Yeah. Any more questions anybody has? If you subscribe a TradingView platform, it is costing around 20 to 80,000 a yearly subscription. This platform is just available at 699 and 699, and you need 5,999. and 5,000 not the price increase with effect from Okay. yesterday. It is 6,999 now. So it is giving all the analysis in front of you without having any doubt. And TradingView is just a charting platform. You can visually see the price. You have to build your own indicator, everything. And in 20, even after giving 20, 40,000 there. But here, there are so many things that you can see. There is a mutual fund screener also. So if you're not interested in stock and ETF, then you can go for mutual fund investing. There are 14,000 schemes listed where you can do the comparison of the schemes. And portfolio lab section, the rank by portfolio lab that we have filter, click on the rank by portfolio quality. अब इसमें आपको ये बता रहा है कि how many portfolios by mutual fund is outperforming the index, because they have same stock that are in stage 2. I have created the filter to know that which of the stock held by the mutual fund which are in stage 2 or stage 4. If they are holding the stage 4 stock, obviously they will not make money. And this type of mutual fund research section, you will not get in 20,000 anywhere. That I promise. So what you're getting, the value at 6,999. The price will be increased after GST implementation, and after this launch offer will be end by the end of the October. By the end of the October, there will be pricing of 9,999 plus GST. Ankit ji, I had bought this plan last week only, and I had selected few stocks, and I had recovered the money in the fees only. That's good. That's good. Sir. भाई देखो, चीज जो बनाई है ना, ऐसी चीज बनी है कि आपको रिकवरी का सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका एनालिसिस, आपका टाइम बच रहा है. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? So everything is there, even technicals are also there, everything is in the platform. And there are multiple indicator which is built in house. मतलब आपको अगर वो चीज आप खरीदने, आप बनवाने जाओगे, सिर्फ एक इंडिकेटर की कॉस्टिंग आपको
20 to 30,000 पड़ती है. That is implemented inside our charting section, which is also in-house development. Charting section, as I sent a message to TradingView to implement your charting library, but they asked for $60,000 that we have that, so that's why we have built our own charting section with Scratch. So if anybody have any question, it can ask, or we should wind up the meeting. So Ankit ji, I think we can wind up the meeting. Hello. जी सागर जी. Okay. So we will wind up the meeting now then. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining and understanding our platform. Really appreciate it. Thank you. Thank you.